Today's topic is photosynthesis. What is the photosynthesis? Photosynthesis meaning literally synthesis using light. Introductions. From Greek, photo means produced by light. Synthesis, a whole made of parts put together, means synthesis using light. What is the definition of photosynthesis? Photosynthesis is a process whereby plant, algae, and bacteria use the energy of sun to produce organic compounds such as sugar from inorganic compound, that is the CO2 and water. So that is the process CO2 plus water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce carbohydrate and oxygen is occur by the photosynthesis. The most active photosynthetic tissue in higher plant is the mesophyll of leaves containing specialized light-absorbing green pigment called is the chlorophyll. Why is photosynthesis so important? Photosynthesis is one of the most important biological processes on the earth. It provides oxygen we breathe, consume much of the CO2 from the atmosphere. Third, provide food in form of the fruits we eat. Fourth, energy. Fifth, fiber and materials. Photosynthetic pigments which capture the lights are the chlorophylls and accessory pigment. Chlorophyll, you already read the chlorophyll A, B. Accessory pigment involve the Phycobilins and Carotenoids. Spelling is mistake, that is the Carotenoids. Phycobilins is three types: Phycoerythrobilins, Phycocyanin, yellow Phycocyanobillins. Phycoerythrobilins you read in the red algae. Phycocyanobillins you read in the cyanobacteria. Due to this color, the blue-green algae are the blue in color due to this pigment. Yellow Phycocyanobillins, that is the cyanobillins. Then carotenoids is two types, Xanthophylls and Carotenoids. First one we detail about the chlorophylls. It is formed from the succinyl coenzyme A. It is the light absorbing green pigment, absorb the blue-red light wavelength. It is made up of lipid which is soluble. It is polycyclic, planar, tetrapyrrole ring. Central metal ion is magnesium and it is act as a chelating agent. It has cyclopentane rings, ring 5, fused to pyrrole ring 3. It has two parts, porphyrin ring, 4 carbon and 1 nitrogen atom present on it. Second is the hydrophobic phytol tail, which is made up of 20 carbon and non-polar in the nature. It is bound with the 4 pyrrole ring. It is attached with thylakoid membrane in grana and flat channel. Chlorophyll structures. This is the chlorophyll structures. I already tell that it has two parts. First is the porphyrin ring, which is made by the 5 rings. You already seen in the diagram 1, 2, 3, 4 and 5. And 4 nitrogen are present, which is linked with the magnesium cyan, which is the act as a chelating agent. And below this hydrocarbon tails made up of the 20 carbons. It is responsible for the solubility in the lipids and insoluble in the water, that is the non-polar in nature.
Then we already know that chlorophyll are different types, that is the chlorophyll A, B, C, D and E. Then chlorophyll, what is the difference in different chlorophylls? The chlorophyll A have methane group, CH3 group on the ring number 2. And in chlorophyll B, it is the CHO group on the ring 2. Chlorophyll C is like the chlorophyll A, except phytol tail is the absent. Chlorophyll D, it is like chlorophyll A, but OCHO group is replaced by CH2 group on the rings. Okay, that is this one in the ring number 1. That is seen in the diagram. So that is replaced by OCHO. What is the difference between chlorophyll A and B? The chlorophyll A and B, first one is the formula. Chlorophyll have formula C55H72O5N4Mg and chlorophyll B is the C55H70O6N4Mg. Color in pure state. Chlorophyll is the blue-green color and chlorophyll B is the olive green. Pigment type, chlorophyll is the essential and chlorophyll B is the accessory photosynthetic pigment. Group of pyrrole ring number 2. On the pyrrole ring 2, methane group is present, but in chlorophyll B it is CHO group, aldehyde group is present. Light absorbing. Chlorophyll mostly absorb red light and chlorophyll absorb the violet blue wavelength light. Reaction center pigment. Chlorophyll A present in all land plants. Chlorophyll B is present in the chlorophyces, Carophyces, Euglenophyces. You can say that it is present in the algae. Type of chlorophylls, already I will told you. Chlorophyll is the most common. Chlorophyll B is also most common. Chlorophyll C present in the brown algae and diatoms. Chlorophyll D present in red algae and blue-green algae. Chlorophyll E is the rare. It is sometimes present in Xanthophylls, that is the yellow-green algae. Different constituent group of the tetrapyrrole rings. There is also bacteriochlorophylls, that is the B chlorophyll. B is related with the bacteria and chlorophyll A. That is B chlorophyll, B chlorophyll B, B chlorophyll C, B chlorophyll D and B chlorophyll E. Bacterioviridae. It is a green sulfur bacteria. Bacteriochlorophyll absorb longer wavelength as compared to the chlorophyll molecules. Second one is the accessory pigment. Already told you there is two types, that is the carotenoid and the phycobilins. The first one is the carotenoids, that is the orange yellow color. Xanthophylls and carotenes are involved in the carotenoids family. Second is the phycobilins. The loss of manganese in chlorophyll causes formation of pyophytin, that is non-green compound. First one we discuss about the carotenoids. Carotenoids, it is supplementary light harvesting. Absorb light of wavelength 425 to 490 nm, mid-region of the visible light. It gives orange or red color. It is generally C40 terpenoid compounds. It is formed by condensation of 8 isoprene unit and it is lipid soluble pigment. It shield pigment protect chlorophylls from the photooxidation. It is responsible for the yellow color of the leaves and it is three form alpha, beta and gamma. That is the different stereoisomers.
Wavelength absorbed is depend on the number of conjugated double bond. Second, isomeric configurations. Third is the nature of the end group. So there are two types. First one is the xanthophyll, which contain the oxygen. It is present in the leaves, lutein, and brown algae, that is the phycoxanthin. Second is the carotenoids, that is not containing the oxygen. It is purely hydrocarbons. The orange color of carrots is due to the carotenoids. You can say that जो गाजर होती कैरेट्स होती उसका जो हम कहते हैं ऑरेंज कलर होता है वहाँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स होते हैं. जनरल फॉर्मूला इज C40 and H56. Then function of carotenoids. It provides protection against photooxidation damage, that is called the photoprotection. It acts as the sequencer as well as the squeezer during the photosynthesis. Third, it also acts as non-photochemical quenching. Fourth, absorb and transfer light to chlorophyll. First one is the photochemical quenching. It is when the energy stored in chlorophyll in the exciting state is rapidly dissipated by a photochemical reaction or excitation transfer is called the photochemical quenching. You can say that कि जब लाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है और वो एक्साइटिंग स्टेट में चला जाता है, ठीक है, तो जो एनर्जी यूज होती है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाने के लिए, तो जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो हम बोलते हैं फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. कैरोटेनॉइड्स यहाँ पे एक्ट करते हैं फोटोप्रोटेक्टिव by rapidly quenching the exciting state of chlorophyll. यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट से आपकी एक्साइटिंग स्टेट में जाती है तो वो रैपिडली जो क्वेंचिंग करता है, क्वेंचिंग यानी कि दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करता है, ठीक है. तो ये को क्या करता है कि आपका जो क्लोरोफिल है, तो आपका एंटीना है, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है. इसलिए ये इसको जो आपका रिएक्शन सेंटर है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है. तो वहां पे ये फोटो प्रोटेक्टिव का काम करता है ताकि आपकी क्लोरोफिल जो है वो आपके डिस्ट्रॉय ना हो. नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. क्लोरोफिल इन एक्साइटिंग स्टेट कैन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग इट्स एनर्जी एज ए हीट फॉर्म इज कॉल्ड द नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. बीटा कैरोटीन्स, इट इज कॉल्ड एज द प्रोविटामिन्स. That is the diagram. We can choose them. This is reaction center P680 and the antenna, which is made by the chlorophyll A, B, and carotenoids. Then light is received by carotenoids and used by the antenna complex, and that is the energy gradient जो है हाई. लाइट में हमारे पास हाई होता है लेकिन रिएक्शन सेंटर में लो होता है, तो ये एनर्जी को जो है चेंज करता है. जो कैरोटेनॉइड होता है ये आपके क्लोरोफिल पिगमेंट को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, ताकि आपकी ये जो एनर्जी ग्रेडियंट है आपका कम हो जाए और आपके जो पिगमेंट्स है, बॉन्डिंग है, वो आपकी डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है. इसलिए ये क्या करता है, आपकी हाई एनर्जी को लो एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपके पिगमेंट को प्रोटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है क्योंकि हाई से लो है, तो आपकी जो कुछ एनर्जी होगी वो आपकी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है और आपका जो है एक्साइटिंग स्टेट में जो आपका सेंटर फोटो सिस्टम जो आपका एक्साइटिंग स्टेट में चला जाता है. कैरोटेनॉइड एज ए फोटो रिसेप्टर. एज यू नो दैट जब लाइट सबसे पहले आती है तो उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, ठीक है. तो ये जो क्लोरोफिल के अंदर स्टोर कर ली जाती है और आपके जो है मॉलिक्यूल्स एक्साइटिंग स्टेट में चले जाते हैं. जब ये एक्साइटिंग स्टेट में जाते हैं तो दो तरीके से हो सकती है, रैपिड क्वेंचिंग और नॉन रैपिड क्वेंचिंग.
तो अगर रैपिड क्वेंचिंग होती है तो आपके जितने भी एक्साइटिंग मॉलिक्यूल्स है वो आपके जो है लो एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डिके बैक टू द ग्राउंड स्टेट बाय लॉसिंग एनर्जी एज हीट फॉर्म। कि एनर्जी की रैपिड क्वेंचिंग के कारण कुछ एनर्जी आपकी जो है हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है और आपके जो कैरोटेनॉइड्स है एज ए फोटो प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं। अगर ये रैपिड क्वेंचिंग नहीं करता है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन से जो आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, वो आपके जो है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ और एक्साइटिंग स्टेट में चले जाते हैं, जिससे जो है आपकी सिंगलेट ऑक्सीजन बनता है। सिंगलेट ऑक्सीजन क्या करते हैं, फिर वो डैमेज कर देते हैं मैनी कंपाउंड्स को और D1 प्रोटीन को करते हैं, जो कि फोटोसिस्टम 2 में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण फोटो इनिबिशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स में आप कहते हैं वायलोजेंथिस, जो फिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंथ्राजेंथिस, जियाजेंथिन आपकी गार्ड सेल्स में होता है। ये प्रोवाइड करता है सिग्नलिंग टू स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। डायटमजेंथिस जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, बेसिलियोफाइसिस में प्रेजेंट होता है। फुकोजेंथिन पियोफाइसिस यानी कि ब्राउन एल्गी में ये प्रेजेंट होता है। फाइकोबिलिन्स are the non-cyclic linear tetrapyrrole structure. It is lack of magnesium ion and phytol chain. It is similar to pile pigment bilirubins. It is water-soluble conjugated proteins. It is covalently bounded with the phycobilin proteins, जो कि आपका वाटर में soluble होगा. Absorb short wavelength lights above the 500 nm. Abundant in red algae and cyanobacteria. ये 3 टाइप का हम काउंट करते हैं। फाइकोएरिथ्रीन जो आपकी रेड एल्गी में होता है, जिसके कारण उसका रेड कलर होता है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। हालांकि ये रेड एल्गी में एक्सेस अमाउंट में मिलता है इसलिए रेड कलर देता है, और आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी में ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। फाइकोसाइनोबिलिस दैट इज द ब्लू कलर आपको देता है, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन लार्ज क्वांटिटी में मिलता है और स्मॉल क्वांटिटी इन द रेड एल्गी। थर्ड इज येलो फाइकोसाइनोबिलिन्स, ब्लू ग्रीन रेड एंड रेड एल्गी। येलो फाइकोसाइनिन का मतलब होता है कि इसमें फाइकोएरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन दोनों ही आपके प्रेजेंट हो। देन नेक्स्ट आपका आता है फाइकोबिलिसोम्स। These are the phycobilin proteins aggregate into clusters that adhere to membranes called the phycobilisomes. Phycobilin proteins are two types: phycoerythrin, which is made by the proteins plus में phycoerythrobilins present in red algae and small quantity in the blue green algae. Phycosinins, that is the proteins plus में phycosainobilins present in the blue green algae in large quantity due to and in the small quantity in red algae. Mostly cyanobacteria contain chlorophyll A, but chlorophyll B, that is present in the prochlorococcus, chlorophyll D in acrylochlorosis. Phytochromes, that is the photoreceptor pigment of the higher plants. Location of photosynthetic pigments. Oxygenic organism which produce the oxygen, that is in prokaryote it present in the thylakoid membrane in cytosol. In eukaryote it present in the thylakoid membrane of the chloroplast. An oxygenic organism, the organism which not produce the oxygen but photosynthesis occur in them, that is the green photobacteria, chlorosomes and plasma membrane. Purple photobacteria present in the chromatophores of plasma membrane. Exceptional cases are present, that is the cyanobacteria. In cyanobacteria it is Glioblacter violaceus. Chromatophores, imaginated plasma membrane contain bacteriochlorophylls pigment. Absorption spectrum. Absorption spectrum is a graph showing degree of absorption of light by a pigment as wavelength is called absorption spectrum.
यू कैन से दैट कि ये एक ग्राफ है जिसमें लाइट अब्जॉर्ब की जाती है, यानी कि डिग्री ऑफ द लाइट कितनी है अब्जॉर्ब की जाती है किसी भी पिगमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल जो होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं लाइट इन ब्लू वायलेट एंड रेड लाइट। कैरोटेनॉइड अब्जॉर्ब करते हैं इन ब्लू एंड ग्रीन रीजन। नेक्स्ट आप करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है कि ये ग्राफ है जो शो करता है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है, कि कितनी डिग्री यानी कि कितनी अमाउंट में भी कह सकते हो आप कि कितनी अमाउंट में कोई भी वेवलेंथ, ठीक है, अफेक्ट करती है फोटोकेमिकल रिएक्शन को, वो हमें शो कर दिखाती है एक्शन स्पेक्ट्रा। तो रिलेटिव इफेक्टिवनेस डिटरमाइंड बाय द absorption spectra of a pigment with action spectra of photosynthesis. Absorption spectra of different pigments are chlorophyll A absorb light in 430 nm and 660 nm. For chlorophyll B it is 463 nm and 643 nm. For bacteria chlorophyll A 364 nm and 770 nm. For bacteria chlorophyll B it is 373 nm and 795 nm. For bacteria chlorophyll C it is 434 nm and 666 nm. Engelmann experiment by Theodore W. Engelmann 1833, ठीक है, it determined the first action spectra by measuring oxygen evolution at different wavelength of light. He used the two algae, Spirogyra and Chlorophyll. ठीक है, तो इसमें क्या कहता है ये भी आपकी लाइट एक प्रिज्म से पास की, मैंने एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि आपकी जो लाइट है वो प्रिज्म से पास की, और हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एल्गी है स्पायरोगायरा है वो आपके एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, जैसे आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो है आपकी ये एक्सेस अमाउंट में कंसंट्रेट हो जाती है, जबकि बीच में ये स्मॉल अमाउंट में जो है प्रेजेंट होती है। तो आप ये देखें कि रेड लाइट और ब्लू लाइट, ठीक है, इनके आसपास जो है आपकी स्पायरोगायरा एक्सेस अमाउंट में जो है एक्यूमुलेट हो गई है, ठीक। तो यहाँ जहाँ पे आपकी एल्गी प्रेजेंट है, जो ऐसी बात है वो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये क्या शो करती है कि आपकी रेड एल्गी और ब्लू लाइट, ठीक है, वो मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। Absorption light energy has three ways. First one, by converting extra energy into the heat form, that is called the fluorescence. Second, transfer of energy, not in form of electron, directly to neighboring molecules by processing resonance energy transfer, Foster transfer. Third is by transferring of high energy electron to another molecules, that is, you can say the neighboring molecules. In this state, singlet state plus में ground state, to normal state of atoms and molecules. Then after that is gone into the exciting state. So what is the exciting state? Exciting state is the photon of light strike with the molecules. Its outer valence electron push into the higher energy orbit. That state is called the exciting state. Then next one आपका आता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या है, ठीक है, फ्लोरेसेंस में जो आपकी एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि जो लाइट एनर्जी आ रही है और आपकी हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, तो उसमें जो एक्साइटिंग मॉलिक्यूल्स होता है पहले सिंगलेट स्टेज में जाता है और सिंगलेट से वो ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रोसेस होती है, या आप ये कह सकते हैं दैट इज द पाथ, इट इज कॉल्ड द फ्लोरेसेंस। एंड इन फोस्फोरेसेंस exciting molecules are firstly goes into singlet state, then triplet state. That is the difference between the fluorescence and the phosphorescence. In fluorescence, it is only goes to singlet state then ground state. But
in phosphorescence, it is goes to exciting triplet state and after then goes to the ground state. Triplet state energy used in the photochemical reactions. In photochemical reaction of photosynthesis are faster known as chemical reactions. Chlorophyll 3 state, या triplet state, first singlet state, second singlet state or triplet state, metastable state. You can say that triplet state is the metastable state. Chlorophyll molecules is more reactive due to longer life period, that is 10 to the power minus 2 seconds. Photosynthetic unit. Photosynthetic unit is made by the 8 minimum photons plus 300 chlorophyll molecules to produce 1 mole of the oxygen. Chlorophyll molecules act as the antenna complex which collect the light and transfer the energy to the reaction center. Then reaction center plus chlorophyll molecules form the photosynthetic unit. Hill reaction. Hill reaction, it is associated with the Photosystem II, where the photolysis of water occur and oxygen involved. Then photosystem II driven light transferred to electrons from water to non-photophysiological oxidant, that is called the Hill reagent. Example के तौर पे हमने लिया NAD positive, which is the biological electron acceptor in the chloroplast. ठीक है, लेकिन हिल रिएक्शन में क्या है कि हमने आर्टिफिशियल कंपोनेंट लिया, दैट इज DCPIP, दैट इज 2,6-dichlorophenol इंडोलफिनॉल डाई. इसमें वाटर लिया, NADP लिया एंड NADPH की फॉर्मेशन हुई और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ. इमर्ज रेड ड्रॉप यानी कि रेड लाइट पे आपका फोटोसिंथेटिक का डाउन हो जाना. तो इमर्जेंस जो है साइंटिस्ट है 1970 एंड सी लेविश 1943, उन्होंने क्लोरेला एल्गी पे एक्सपेरिमेंट किया. ड्रॉप ऑफ क्वांटम यील्ड बियॉन्ड रेड region of spectrum called the emergent red drop phenomena. It suggests that light of wavelength greater than 680 nm, that is the red region, is less efficient than the light of short wavelength. Then quantum yield क्या है? Quantum yield है number of oxygen molecules produced per photon absorbed of the light is called the quantum yield. Quantum requirement, number of photons needed for production of 1 molecule of oxygen is called the quantum required. Immersion enhancement effect. It is the rate of photosynthesis was 2 to 3 times greater when applied simultaneously red and far red light. Then sum of rate obtained with each beam separately. इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट कहता है जब हमने रेड और फार रेड लाइट डाली तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो 2 से 3 गुना हो गया. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस में जो है 2 फोटो सिस्टम होते हैं जो आपके कॉन्टिन्यूअस काम करते हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और तभी आपका फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट आपका बनता है. Photosystem pigment system of photosystem. It has 2 parts. First one is the photochemical reaction center or trap center. Second is the antenna. Pigment bound to protein form pigment protein complex or pigment system photosystem. It is tightly packed with the membrane. तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर जो है 2 पार्ट होते हैं, आयरन सल्फर टाइप 1 एंड पियोफाइटिन क्विनोन टाइप 2. इसका फंक्शन होता है कन्वर्ट फोटोन एनर्जी, सेकंड सेपरेट द चार्ज फ्रॉम इनिशियल इलेक्ट्रॉन. सेकंड आता है एंटेना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. इट इज मेड बाय द क्लोरोफिल्स एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स. Number of distinct protein pigments complexes are present in the antenna. It captures the light energy and transferred to the reaction center by the process of resonance energy transfers. It is varies in size, that is the 200 to 300 chlorophylls
per reaction center. All photosynthetic organisms possess antenna complex. Example है हेलोबैक्टीरियम. एंटीना कम्प्लेक्स जो होता है आपका लाइट एनर्जी कैप्चर करता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट करके रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू आपका रिएक्शन सेंटर में भेजता है. तो प्रोसेस क्या हुई कि लाइट एनर्जी एंटीना कम्प्लेक्स के द्वारा रिसीव की जाती है. इस एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है रिएक्शन सेंटर में. रिएक्शन सेंटर से आपके जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और आपकी इनिशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि लाइट रिएक्शन जो आपकी शुरू हो जाती है प्लांट के अंदर. डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम 1 and 2. First one is the location. Photosystem 1 is present in the grana and stoma lamellae of the chloroplast. जबकि photosystem 2 present in the partition or oppressed membrane of the grana thylakoids. Second size. Photosystem 1 is the 11 nm. जबकि photosystem 2 का साइज होता है 17.5 नैनोमीटर होता है. Photochemical reaction center of chlorophyll A. Photosystem 1 में जो होता है P700 होता है जबकि फोटोसिस्टम 2 में ये P680 होता है. ट्रैप सेंटर, कोर सेंटर या P700 कंपोनेंट्स. तो इसमें जो आपके ट्रैप सेंटर कंपोनेंट कह सकते हैं आप. तो फोटोसिस्टम 1 में क्लोरोफिल A 700, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर प्रोटीन्स एंड सम अननोन रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं. जबकि फोटोसिस्टम 2 में ये क्लोरोफिल 680, 30 to 40 chlorophyll molecules, 2 or more electron donor or acceptor such as the quinone, pyophytins are present. Fifth, light harvesting system. Photosystem 1 में जो है आपका chlorophyll और B दोनों जो होते हैं 200 molecules के बने होते हैं. Less number of carotenoids present होते हैं, Phycobilins प्रेजेंट होते हैं और हाई क्लोरोफिल A and B रेशो होता है. जबकि फोटोसिस्टम 2 में ये क्लोरोफिल और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अबाउट 200 के करीब होते हैं. इसमें जो होते हैं मोर नंबर ऑफ कैरोटिनॉइड्स होते हैं, लो क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B रेशो होती है. फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है आपका वो आपके फोटोसिस्टम 2 से ड्राइव होता है. जबकि फोटोसिस्टम 2 में डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए, ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू फोटोसिस्टम 1. फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फोटोसिस्टम 1 इज द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. जबकि फोटोसिस्टम 2 में ये जो होता है नॉन साइक्लिक होता है. स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो स्टेजेस हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज द लाइट रिएक्शन, सेकंड इज द डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन को करने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है जबकि डार्क रिएक्शन के लिए हमें जो है लाइट की आवश्यकता नहीं होती, वो प्लांट के अंदर होती रहती है. समटाइम्स स्टूडेंट्स थिंकिंग अबाउट दिस डार्क रिएक्शन अकर एट द नाइट टाइम. दैट इज रॉन्ग. The dark reaction occur during the day because photosynthesis reaction complete occur in the duration of the light. आपकी दिन में ही जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है. तो इसमें ये जो 2 आपके स्टेजेस होते हैं उसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि लाइट रिएक्शन के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है जबकि डार्क रिएक्शन के लिए हमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो प्लांट के अंदर अपने आप होती रहती है. यानी कि ये जो है लाइट पे इंडिपेंडेंट है. ठीक है. तो लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन इज द फेज. लाइट रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द लाइट बट डार्क रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट. सेकंड occurrence, light reaction occur in the grana but dark reaction occur in the stoma. Third reaction types, it is photochemical, means photo यानी कि लाइट की आवश्यकता पड़ेगी आपकी रिएक्शन होने के लिए. But in direct reaction, it is the chemical reactions. Then next is the product. Light reaction में ATP और NADPS बनता है जबकि डार्क रिएक्शन में ATP और NADP यूटिलाइज होता है, फ्रक्टोज बनता है आपका लास्ट में. रिएक्शन अकर
इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, जबकि डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ CO2 होती है। टाइप लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होती है, जबकि डार्क रिएक्शन में जो आपकी साइक्लिक होती है, जिसमें हम C3 साइकिल कहते हैं, और C4 प्लांट में C4 और C3 दोनों ही साइकिल होती है। Evidence for the two phase of photosystem. First one is the flashing light experiment. Second is temperature coefficient. Third is carbon dioxide reduction in dark. तो फ्लैश लाइट में क्या कहता है कि वारबर्गर ने एक्सपेरिमेंट किया एक ग्रीन एल्गी दैट इज कॉल्ड द क्लोरीला, ठीक है। उसने कॉन्टिन्यूअस लाइट दी तो आपका फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बना वो कम बना, लेकिन जैसे उसने लाइट और डार्क अल्टरनेट फॉर्म में दी तो जो फोटोसिंथेटिक यील्ड थी वो आपकी बढ़ गई। तो इससे प्रूफ होता है कि फोटो सिस्टम में जो है दो फेज होते हैं, दैट इज द लाइट फेज एंड डार्क फेज। सेकेंड इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट या Q टाइम, इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन at a given temperature of time T to a temperature less than 10 degree. Its value for pure chemical reaction is 2 or more time, but photochemical reaction it is unit. Blackman experiment shows that Q time is unity in low intensity light intensity, so photochemical reaction occur. But it is more than two times or more in the well illuminated plants. It shows that there will be thermal chemical reaction is also present. Third is carbon dioxide reduction in dark by the Kelvin. So the Kelvin exposed green plant to the light in presence of CO2, then transfer immediately into dark with supply of the carbon dioxide. He observed that carbohydrate is formed. It shows that the first part is the light reactions, which is purely photochemically, and second part is the dark reaction, which is the thermochemically, and carbohydrate is the formed. Then first one is the light reaction. Light reaction, it converts light energy into NADPH2 and ATP. It is the fast processing. It completes its cycle in 1 × 10⁻⁻⁴ seconds. It has two parts, cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylations. Photophosphorylation. What is the photophosphorylation? Photophosphorylation, it is the formation of ATP from ADP and the phosphor by utilization of the light energy. Light reactions has two parts, cyclic photophosphorylation, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि cyclic photo electron transport and non-cyclic photo electron transport, or also called the non-cyclic photophosphorylation, or also called the Z scheme. Component of the light reaction. There are different components. First is the two photosystem, that is the photosystem I and photosystem II, in which it is photo-oxidation phase. Second is the water oxidizing system, where electron is spliced to photosystem II and photolysis occur in this system. Third is enzyme complex, that is the FD-NADP oxidoreductase. Fourth is the ATPase और कपलिंग फैक्टर, जहाँ पे ATP जनरेट होती है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 to photosystem 1 and to NADP. It consists of cytochrome Bf, enzyme complex and mobile carriers, that is the plastoquinine, plastocyanin and ferrodoxin. Plastocyanin and ferrodoxins, they are the subtle system in the light reactions. Plastoquinine acts as the shuttle between the photosystem 2 and the cytochrome Bf. You can see in this diagram.
प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6, इसके बीच का स्ट्रेस सिस्टम हो गया क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है, मोबाइल हो गया कन्वर्ट। सेकेंड है PC प्लास्टोसाइनिन, जो कि आपकी साइटोक्रोम B6 और P700 के बीच में। तीसरा FD है आपका, जो कि आपकी PQ और P700 फोटोसिस्टम 1 के बीच का है। देन नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द कंप्लीट लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन निकलती है और 4 हाइड्रोजन प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 4 हाइड्रोजन आपके एटीपी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, जहाँ पे आपकी एटीपी सिंथेसिस होती है, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन जेड बाय अननोन फैक्टर दैट इज द जेड, इसके द्वारा फोटोसिस्टम 2 में जाते हैं। और आपकी जैसे लाइट फोटोसिस्टम 2 पे पड़ती है, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके जो है हेल्प करते हैं और आपका फोटोसिस्टम 2 आपका एक्साइटिंग स्टेट में जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका प्योफाइटिन में जाता है, प्योफाइटिन से आपका क्यूनिन ए और बी में जाता है, क्यूनोन ए बी से आपका प्लास्टोक्विनोन में जाता है, जो कि इंटर कन्वर्टिबल होता है प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन के साथ। ठीक है, यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन जो आपके एटीपी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि एटीपी कॉम्प्लेक्स में 4 हाइड्रोजन आपके फोटोलिसिस ऑफ वाटर की तरफ से आते हैं और 2 हाइड्रोजन आपके प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम बी की तरफ से, यहाँ प्लास्टोक्विनोन की तरफ से आते हैं, जिसके कारण आपका एटीपी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका साइटोक्रोम B6 और BF कॉम्प्लेक्स से आपका प्लास्टोसाइनिन में जाता है, जो कि मोबाइल आपका पिगमेंट होता है। यह आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है P700 में, जो कि एक्साइटिंग स्टेट में चला जाता है लाइट एनर्जी के साथ। ठीक है, तो रेड लाइट पड़ने के बाद जब ये एक्साइटिंग स्टेट में चला जाता है, तो वहां पे अननोन फैक्टर A0 A1 इसको रिसीव करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में। वहां पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो है फेरोडोक्सिन की प्रेजेंस, इलेक्ट्रॉन जो है फेरोडोक्सिन को ट्रांसफर करता है। यहाँ से हमारा जो है पता चलता है कि हमारा साइक्लिक चलेगा या नॉन साइक्लिक रिएक्शन। अगर ये FNR, ठीक है, आप फेरोडोक्सिन NADPH रिडक्टेज इसके थ्रू जाता है, तो आपके यहाँ NADPH की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये 2 है आपकी एनर्जी फॉर्मेशन हो गई। तो ये आपका नॉन साइक्लिक हो गया और रिएक्शन आपकी जो है जेड साइकिल के अकॉर्डिंग हो गई। ठीक है, अगर आपका FD इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है PQ को, तो वो प्रेजेंस में FDPQ ऑक्सीडो रिडक्टेज इस एंजाइम की प्रेजेंस में ATP की फॉर्मेशन करता है और आपकी जो साइकिल होती है वो आपकी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बन जाता है। आपके Q, जैसे हमने कहा कि PQ प्लास्टोक्विनोन जो है प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से आता है, दैट इज फ्रॉम द स्टोमा 2 हाइड्रोजन। तो दैट इज overall this process is the light reactions. Phycobilins, it is a chlorophyll molecules in which magnesium 2 positive is replaced by the 2 hydrogens. Plastoquinone present in both tightly and loosely bound. QA, it is the primary quinone bound to D2 proteins, and QB is the secondary quinone which is bound to the D1 proteins. Photosynthetic active quinone presents by combination of both. QA, it is photoreduced into the plastosemiquinone, which is nearly half reduced. QB 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के साथ प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, इट इज इंटरकन्वर्टेबल इनटू प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन, दैट इज द फुली रिड्यूस्ड. Other active quinones are ubiquinone in the green photosynthetic bacteria, minaquinone purple photosynthetic bacteria, phyloquinone in photosystem 2 and plastoquinone in photosystem 1 and plastoquinone in the photosystem 2. Cytochrome B6F complex, which is lie between the photosystem 2 and 1, it oxidizes plastoquinone and pump proton from stoma into the thylakoid membrane. Cytochrome F, it transfer electron to the plastocyanin
possess one distinct key iron sulfur protein, two B-type hemes, one C-type hemes. Plastocyanins. It is small water soluble and copper containing protein that transfer electron between cytochrome F complex and P700. Copper atom. It is the electron carrier in the plastocyanin. Phyloquinone. That is the vitamin K1. It transfers electron to the iron sulfur center, that is 4Fe or 4 sulfur compound. Ferrodoxins, it is a small water soluble iron sulfur proteins. FNR are soluble protein, that is the soluble flavoproteins. Ferrodoxin, NADPS and reductase catalyze transfer of electron from reduced ferrodoxin to NADPS. 2 electron required from reduction to NADPS. So overall reaction we can say is that photolysis of water, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है क्रिएट होता है फ्रॉम वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन आपके फोटोसिस्टम 2 में जाते हैं. वहां से ये फोटोसिस्टम 2 से जो आपके एक्साइटिंग स्टेट में जाते हैं फोटोसिस्टम 2 और 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन लेके आपकी जो है फोटोसिस्टम 1 में जाते हैं. फोटोसिस्टम 1 में जाने के बाद आपका क्रिएट होता है 2 NADPH. Then oxygen involving complex. It is locations present in the luminal surface of thallic membrane containing several proteins, manganese stabilized proteins, PSPP and PSPQ, plus में 4 magnesium with calcium ions, chlorine negative, bicarbonates ion. It oxidizes waters and pass electron to photosystem 2. Involve 5 different states S0 to S4 by proton driving redox reaction. Tyrosine residue in D1 protein of the photosystem 2 reaction center form radicals. At each step, extreme short flashlight, that is protons, is required and 1 electron released. So total 4 electrons are released from the oxygen involving center. In fourth stage, oxygen released along with 4 hydrogen and S4. Only 1 electron passed from manganese center to the D1 proteins. YZ is the electron carrier between oxygen involving complex and photosystem 2. This is the structures. I already said that कि आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग सेंटर में 5 स्टेज होते हैं, दैट इज S1 to S4, S0 to S4, S0 1 2 3 4. आपकी जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है वो S4 से हो रही है, ठीक है. और हर एक सेंटर से S0 से आपका जो है अननोन इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ जाता है. तो आप देख रहे हो S1 से S2 से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, S2 से S3 से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है. तो हर एक स्टेज से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका. तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है फोटोसिस्टम 2 में आपके जाते हैं. एटीपी सिंथेसिस, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी एक सिस्टम एटीपीज कम्प्लेक्स होता है जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होते हैं और वो आपके प्रोटॉन लेता है फ्रॉम ऑक्सीजन वाटर, ठीक है, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और 4 हाइड्रोजन और 4 मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉन बनते हैं. तो जो 4 प्रोटॉन बनते हैं आपके ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर वो आपके जाते हैं एटीपेज कम्प्लेक्स में. तो एटीपी सिंथेसिस ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट which generate proton motive force. Absorption of 8 proton 4 by each photosystem generate 1 molecules of oxygen and 4 protons from the thallicoid membrane. Total 12 protons released in the lumen. It passed back into the stroma by ATP synthase, that is the F0 CF1 ATPase.
प्रोडक्शन ऑफ 4 molecules ATP per molecules of oxygen involved, यानी कि क्या कह रहा है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब क्रिएट होगा तो यहाँ जो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आप पता है डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन और साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो फर्स्ट वन आप पता फोटोसिस्टम इन्वॉल्व, नॉन साइक्लिक में दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम 1 and 2, जबकि साइक्लिक में ओनली फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो तो नॉन साइक्लिक में ये जो होता है फ्रॉम कोर सेंटर इज यूज्ड अप इन द रिड्यूस्ड एनएडीपीएस, जबकि साइक्लिक में फ्रॉम कोर सेंटर रिटर्न टू द सेम प्लेस। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, जबकि साइक्लिक में नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोडक्ट आपके नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपी दोनों बनती है, जबकि साइक्लिक में ओनली एटीपी जनरेट होती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो आपके नॉन साइक्लिक में प्रेजेंट होते हैं और आपकी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, जबकि साइक्लिक में आपकी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। फंक्शन नॉन साइक्लिक में जो है सप्लाई एसिमिलेटरी पावर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डायरेक्ट रिएक्शन, जबकि साइक्लिक में ओनली एडिशन ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फुलफिल। न्यूमेरिकल है, जैसे कि एटीपी सिंथेसिस जब हम कहते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिपेंड ऑन ईपीजी which generate translocation of proton across the membrane. However, component of EPG differ in mitochondria and chloroplast. Explain. तो इसका solution क्या है कि net effect of proton translocation similar in both, but EPG different in both. In chloroplast, stoma pH is 8 and thylakoid space पे pH 5 होता है, तो EPG difference is 3 to 3.5 unit. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू 200 MV मिलीवोल्ट पर pH यूनिट। तो अगर इसको हम डिफरेंस कितने का आ रहा है क्लोरोप्लास्ट में 3 to 3.5, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो ये कितना हो गया, दैट इज द 600 to 700 मिलीवोल्ट हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट में। इन माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स का pH 8 होता है, जबकि साइटोसोल्स का 7 होता है, तो pH ग्रेडियंट 1 हुआ, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओनली 200 मिलीवोल्ट हुआ। तो आपका EMF जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, द EMF अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रिया इन द मेम्ब्रेन इज द सेम एज द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। It is because of the membrane potential. The formation of ATP due to light-induced cyclic electron flow called cyclic phosphorylation. So no NADPS and O2 evolution occur in the cyclic electron flow. तो आप ये कह सकते हैं कि आपके इसी EPG के डिफरेंस के कारण ही जो आपका क्लोरोप्लास्ट और आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इन दोनों में जो एनर्जी जनरेट होते हैं वो आपके डिफर कर जाते हैं। देन इनहिबिटर ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, फर्स्ट वन इज द DCMU एंड सेकंड इज द पैराक्विट। DCMU इट इज 3,4-dichloropheniल 1-dimethyl urea. It is also called the diuron. It is herbicides, stop oxygen production during the photosynthesis. It competes with the plastoquinone for the QB binding site of photosystem II. It blocks electron flow from photosystem II to cytochrome B6F complex, or you can say non-cyclic electron transport. Second is paraquat. Paraquat is also a herbicide. It blocks electron flow between ferredoxin acceptor and NADPS. It reduces oxygen to peroxides, and oxygen it is free radical lead rapid loss of chlorophyll activity. It is inhibitor of cyclic electron transport, यानी फोटोसिस्टम 1। तो आप ये कह सकते हैं DCMU जो है आपको इनहिबिट करता है नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, जबकि पैराक्विट इनहिबिट करता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से।